Good morning everyone, welcome to Concepts of Mathematics. So in the previous session we have discussed about how to find out the value of x in type 2 equation. Type 2 equation जहाँ थिला सेतिर हमें x ର value बाहर करथले और ultimately हमें solution बाहर करथले. बुझियाला type 2 means there is the equation in the form of bracket. Okay, so it is called type 2 equation. So बर्तमान type 2 equation हमें already बुझी सारछे केमति के हमें तार solution बाहर करिबा. So in this session we will discuss how to find the value of x or how to solve an equation which is in form of type 3. Okay, so this session रे हम कौन करिबा type 3 type रो equation को solve करिबा. Okay, देखिबा what is type 3 type of equation हला ता अगर आउट स्मॉल जिंस हम तुम कहि रखे माने करो जेंति 3x रो मीनिंग कोन 3x रो मीनिंग है 3 into x. yes or no? Yes, similarly 2x ର meaning ହେଲା कोन 2 into x. Okay, similarly 3 by 2x ର meaning कोन 3 by 2x ର meaning सेम है कि 3 by 2 whole into x. Okay, so x टा कोठी ताले मल्टीप्लाई होय सब बळे न्यूमरेटर एटा मन रखथिबो जे x टा न्यूमरेटर पई ही अछि. सपोज एमति न था कि एमिति क्वेश्चन थिबो 3x by 2 यार मीनिंग कोन यार मीनिंग से x टा का सहित मल्टीप्लाई हो सब बळे 3 सहित एठी भी x टा का सहित मल्टीप्लाई हो 3 सहित एठी x टा कोठी अछि मझिरे अछि ता माने भी सही न्यूमरेटर सहित मल्टीप्लाई होछि. एठी x टा एठी न्यूमरेटर अछि ता माने भी सेम कि 3 by 2 सहित x टा मल्टीप्लाई होछि ता माने x टा का सहित मल्टीप्लाई होछि न्यूमरेटर सहित मल्टीप्लाई होछि. बुझियाला. सो हमें वर्तमान टाइप 3 टाइप रो क्वेश्चन को सॉल्व करिवा देखिबा एटा केमिति का सॉल्व होछि. ओके, सो बर्तन देखो टाइप 3 टाइप रो इक्वेशन रे कोन अछि ना तार भी दुटा साइड अछि LHS आउट साइड अछि RHS एंड बोथ द साइड विल कंटेन वेरिएबल टर्म. ताले बोथ साइड रे कोन अछि गोटे वेरिएबल अछि. बुझियाला कि नै. सो आपको हमें केमिति का सॉल्व करे एटा गोटे जिंस हमको लक्ष्य रखिया पड़िबो. देखो LHS हो बा RHS हो कोठी भी गोटे फ्रैक्शन थिला बडे देखा होछि ना नै देखिला LHS रे फ्रैक्शन अछि ना नहीं 7 by 2 is a fraction. yes or no? yes, similarly RHS रे फ्रैक्शन अछि 3 by 2. so type 3 इक्वेशन में कोन हुए फ्रैक्शन गोटे आसी जिवो. बुझियला जति फ्रैक्शन आसीयो ताहले हम त केमिति का सॉल्व करिवा वर्तमान देखिए ताको केतरा प्रोसीजर फॉलो करके करिवा सेम प्रोसीजर जेंति हम करिथिले प्रीवियस रे सेही जिंस बाकी किछि चेंजेस करिवार अछि. कोन चेंजेस करिवा वर्तमान देखिबा. अच्छा एठी केतरा फ्रैक्शन अछि दुईटा फ्रैक्शन कोन कोन ताको आगे लिखि देबा 7 by 2 गोटे फ्रैक्शन आउ देखि 3 by 2 हो जोटा फ्रैक्शन. सो एबे कोन करिवा ना एई फ्रैक्शन रो डिनोमिनेटर केते 2 एई फ्रैक्शन रो डिनोमिनेटर केते 2. सो कोन करिवा स्टेप फर्स्ट स्टेप रे जो फ्रैक्शन मान को डिनोमिनेटर नै से मान को एलसीएम बाहर करिवा. बुझियला. we have to find out the LCM of the denominator. so kete hoji dekho so LCM kete gala 2 into 1 into 1 that is 2. this is our first step. okay, so first step is jodi bhi konosi jagah re konosi fraction thae you have to find out the LCM of their denominator. okay, so the LCM kete hela 2 he gala. clear. now kon kariba 2 को जो बाहरला एलसीएम ताको बोथ LH साइड रे मल्टीप्लाई करबा RHS रे मल्टीप्लाई करबा त माने कोन करिया हम लिखि दउची बुझिया मल्टीप्लाई 2 ऑन LHS एंड RHS. यार मीनिंग कोन ना जो एलसीएम हमें 2 पाइले नी एडी एलसीएम पाइले 2 ए से 2 को एथे भी मल्टीप्लाई करबा आ कोडी मल्टीप्लाई करेगा RHS रे भी मल्टीप्लाई करबा. बुझियाला. देखिए केमती का मल्टीप्लाई करछन ताले LHS रे मल्टीप्लाई कर मान 2 केते मल्टीप्लाई करे 2 होल इनटू केते ताको पूरा ब्रैकेट कर दियो 5x plus 7 by 2. क्लियर. ओके, सो 2 होल इनटू LHS. सिमिलरली 2 टा कोडी मल्टीप्लाई हबो RHS रे मल्टीप्लाई माने केमती का 2 होल इनटू 3 by 2 देखो 3 by 2x माने मु एमती लिख पारिबी किछ असुविधा नै 14. क्लियर हे गला. ओके, अप टू दिस यू आर क्लियर. नाउ कोन करिया देखो
देख एटा कोन हे गला a into b plus c फॉर्म में आसे गला ना नहीं लाइट को रूल अप्लाई हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओके सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एठी अप्लाई हो माने कोन 2 टा मल्टीप्लाई हो या सहित 2 टा मल्टीप्लाई हो या सहित सिमिलरली एठी 2 टा मल्टीप्लाई हो फर्स्ट सहित पुनी 2 मल्टीप्लाई हो सेकंड सहित ओके सो मल्टीप्लाई करिवा देखो ताले 2 होल इनटू का से मल्टीप्लाई हो 5x ब्रैकेट प्लस 2 होल इनटू 7/2 इज इक्वल टू ब्रैकेट अछि एटी सेमती कर दे 2 टा मल्टीप्लाई हो का सहित 3/2 सहित into x 3/2x पुणी अछि 2 टा मल्टीप्लाई हो 14 सहित तापर को चिन्ह अछि माइनस ओके हे गला बर्तन देखो 2 into 5x केते हो सब बेले ते मल्टीप्लाई करिवो दुटा पॉलिनोमियल को सेते बेले कोन करिवो ना से माने कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिवो माने कर हमें मल्टीप्लाई करिवा 7x into 2x ओके तले एटा मल्टीप्लिकेशन रा आंसर केते बाहरिबो कहलो सब बेले मन रखिबो कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिवो इनटू वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करिवो सो 7 into 2 जा 40 x into x जा x स्क्वायर बुझियला कि नहीं सो एमिति का मल्टीप्लिकेशन करा जाय तमे चाहे मनर आउट इक्वेशन थिबो 2x into 3 मल्टीप्लाई करिया मु कोन कहली कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट सहित मल्टीप्लाई करियो सेठी कोएफिशिएंट के 2 into एटी कोएफिशिएंट के 3 into एटी वेरिएबल के x एटी वेरिएबल अछि कि किछ नै छाड़ दियो तो केते हेला 2 3 जा 6x ओके सो सेमिति का बर्तन एटी मल्टीप्लाई करियो सो 2 into 5 10x प्लस ए देखो कोन होजी 2 2 कैंसिल काहे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है प्लस 7 इज इक्वल टू ए देखो 2 2 कैंसिल काहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और रहले कि 3x minus 2 into 14 जा 28 बुझिला एबे नॉर्मल फॉर्म का आसे गला एबे हमें आराम से कर परिबा केमि कर परिबा वेरिएबल को गोट साइड को नै दिबा कांस्टेंट को गोट साइड को नै दिबा इजीली कर दे परिबा एपटे वेरिएबल के अछि 10x तो 10x को फिक्स कर दबा एपटे के अछि राइट हैंड साइड रे वेरिएबल तो 3x एंड ता साइन अछि प्लस ये आसे गो साइड को लेफ्ट हैंड साइड को कोन हे जिवो माइनस हे जिवो ओके सो माइनस 3x इज इक्वल के रहि वाला ताको फिक्स रखि दियो माइनस 28 तापर 7 को कोपट को नवा जेतो 7 टा उठे कांस्टेंट तो 7 को भी कांस्टेंट को नवा राइट हैंड साइड को एटा अछि कोन प्लस 7 से कोन हे जिवो माइनस 7 हे ओके सो एबे केते कॉमन जिवो x x पळेला रहला केते 10 minus 3 minus 28 minus 7 same means they are being added 20 plus 7 is 35 and minus symbol is used. Now 10 minus 3 is 7x is equal to minus 35. हमें क्या वैल्यू बाहर करिबा x रा वैल्यू बाहर करिबा जे तमे ए x रा वैल्यू बाहर करिबा ताले 7 टा कोन करिबा राइट हैंड साइड को नै जिबा 7 टा कोन हे गछि वर्तमान मल्टीप्लिकेशन so when 7 goes to right hand side it will be divided okay 7 1 7 5 so result कौन बाहरला x is equal to how much minus रहला 5 okay so this is our solution so it has type 3 type of equation and in this type of equation you can first what you will do first you have to find out whether there are any fraction or not if there are fraction then you have to find out the LCM of the denominator okay denominator LCM बाहर करिबा then what we will do then we have to multiply that LCM with left hand side with right hand side तापरे से LCM को left hand side right hand side से तो multiply करिबा multiply करी कि हमें general equation नै आसीबा तापरे we can easily find out the value of x okay now coming to the question 2 question 2 is also a similar type of question as question 1 here also we have two sides and in two sides we have a term which contains variable and here also it is a type 3 equation why because it has two fractions it is fractions अछंती के fraction गोटे होची 3/7 और सेकंड होची के 2/3
जेहेतु ये दुटी फ्रैक्शन अछि सो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर सो हमर डिनोमिनेटर है कितने 7 and 3 so we have to find out their LCM okay so LCM is 3 into 7 into 1 into 1 is equal to 21 तला LCM कते बाहरला 21 हमर टास्क कोन थिला LCM जेति बाहरिबो that should be multiplied with LHS and also RHS so write multiply 21 on LHS and on RHS LHS और RHS रे भी हमें 21 मल्टीप्लाई करबा so let us multiply एटा है LHS साइड एटा है RHS साइड so इथरे 21 मल्टीप्लाई करिया हम एमति लिखिबा 21 होल इनटू 3 by 7x minus 2 is equal to right hand side so 21 मल्टीप्लाई करिबा 2 by 3x plus 3 clear now कौन करिबा देखो एटा आसीगला फॉर्म रे a into b minus c बा b plus c किछि नै पारा सब जरा अछि a into b minus c फॉर्म रे अछि ताले एटा देखो एटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होबा ना नहीं एटा b से मल्टीप्लाई होबो आ एटा c से मल्टीप्लाई होबो सिमिलरली एटा 21 मल्टीप्लाई होबो 3 by 7 सहित आ मल्टीप्लाई होबो का देतो 2 सहित सो लेट अस मल्टीप्लाई so 21 मल्टीप्लाई होबो 3 by 7x सहित मला गटे आको इरेज कर देली तापरे कोन हबो 21 मल्टीप्लाई हबो 2 सहित 21 into 2 and the symbol used here minus is equal to exactly 21 multiplied with this and 21 multiplied with this so 21 whole into 2 by 3 x गोटे प्लस साइन रहबा तापरे 21 whole into 3 clear then see 21 the numerator अछि 7 is in the denominator so cancel kori pariba 7 1 7 3 okay so 3 into 3 is 9x minus 21 into 2 is 42 is equal to देखो 3 1 3 7 so 7 into 2 is 14 आउट कोन अछि x अछि plus 20 into 3 is 63 clear now at a normal form में आसी गला so now we have to make all the terms having variables into one side and make all the terms which are constant into other side जति कि वेरिएबल अछन ताको ओट साइड को नहीं आसी so 9x है 9x फिक्स 14x आसी को आडू लेफ्ट हैंड साइड को but 14x आगे कोन अछि प्लस it will be minus when it comes to the left hand side so it will be 14x is equal to next right hand side कोन रह जाय कांस्टेंट 63 तले आउ किछि कांस्टेंट अछि के इक्वेशन में अछि -42 सी को साइड को जीवो it will be moved to the right hand side so it will move to the right hand side -42 so it will be plus 42 now common x is the common so excluding x we have 9 excluding x we have 14 is equal to 63 plus 42 is 105 okay then 9 minus 14 smaller number minus larger number will be negative sign 9 minus 14 is minus 5x okay is equal to 105 and our target is to find the value of x so minus 5 must be moved to the right hand side since minus 5 x means minus 5 into x is equal to 105 so the minus will be moved to the right hand side since it is multiplied so left hand side ki rahi jibo x right hand side ki rahi jibo 105 ki move करछि -5 move करछि त मल्टीप्लाई है के यार बोले कोन है डिवाइड है okay so -5 1 -5 2 1 so our result is x is equal to 21 by -1 you can also write it as x is equal to -21 because minus sign टा ऊपर को भी उठा ले किसी प्रॉब्लम नहीं so it is -21 and this is the value of x and the ultimate result of the equation okay
So तुम्हें चाहे भी चेक कर पाइबो whether your equation or whether your solution is correct or not by putting the value of x in the LHS and in the RHS. If LHS and RHS are equal, then your answer is perfect. Okay. So then question number 3 and 4 are also similar type of question. So let's find out the solution. So in question 3 we have 2y plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y. So first task is to check out whether there are any fraction. एटी किसी fraction अछंती की अछि दुटा fraction किए किए 5 by 3 गोटे fraction आ गोटे की fraction 26 by 3. अच्छा 5 by 3 डिनोमिनेटर केते 3, 26 by 3 denominator hela 3. So we have to find out the LCM of the denominator. Kete asibo 3 1 1. So LCM is 3 into 1 into 1 is equal to 3. So it is clear. LCM is how much? 3. Okay. So what we will do next? In the next we have to multiply this 3 with the LHS and with the RHS. तामाने 3 को हमें मल्टीप्लाई करिबा LHS रे भी RHS रे भी. So एटा को लिखिबा मल्टीप्लाई 3 on LHS and RHS. Okay, so multiply. So 3 into LHS is how much? 2y plus 5 by 3. Similarly is equal to 3 is multiplied with the RHS. So 3 whole into 26 by 3 minus y. Okay, so it is in the form a into b plus c. Okay, so we have to use distributive law or property here. That means 3 into this and 3 into this. So let us multiply. So 3 into 2y, 3 into 2y bracket and 3 into 5 by 3 bracket. Then in between them we have to use plus sign is equal to, in the right hand side what we have 3 into this and 3 into this. That means 3 into 26 by 3 bracket then minus sign 3 into y. Okay, clear? Then 3 into 2y means coefficient into coefficient. 3 into 2 6 and only one variable, so 6y plus see here 3 in the numerator, 3 in the denominator. So 3 1 are 1, 3 1 are 1. So it will be 5 into 1 is 5. Okay, then multiply करिबो एटा को भल्ला देखि multiply करिबो. जदि तुमे चाहेबा एमिति भी multiply करि परिबो. Suppose अछि 3 into 5 by 3. So तुमे लिखि परिबो 3 into 1 into 5 by 3. तामाने numerator into numerator by, okay, 1 into 3. 3 into 5 is 50 and 1 into 3 is 3. 3 1 3 5. So result is 5 here. So that 5 I am writing here. So you can use this method or you can use this method. Both are correct. So it will be 5. Similarly 3 3 is cancelled. 3 1 3 1. It will be 26 minus 3. देखो एठी कोफिशिएंट जेतु वेरिएबल अछि y कोफिशिएंट किछ नै माने केते अछि 1 अछि. So 3 into 1 is 3, 3y. Okay, now the general equation is here. Then कौन करिबा ना we have to close the nearer or come nearer to the terms which contains the variable. जो term गुडा करे variable अछि से मानको पाखा पाखी आनिबा. 6y को फिक्स रख देले त्रा पाखो क्या आसीबो -3y आसीबो and minus जेतो जे right hand side to left hand side को आसीबो it will be plus 3y. Okay, then here रही जाउची 26 left behind. So 26 is fixed in its place. So 26 वाली ଗୋଟେ constant आ पाखो क्या आसीबो 5 आसीबो. तले 5 ता थिला कोन प्लस हे दिला राइट हैंड साइड को आसीबो कोन हे जिवो माइनस हे जिवो -5. Okay, now 6y plus 3y, y take as common, it will be 6 plus 3 is equal to 26 minus 1 is, or 26 minus 5 is 21. 6 plus 3 is 9y is equal to how much? 21. Okay, so your target is to find ey. So you can write y is equal to, y is fixed,
because we want to find the value of y and 9 have to move towards the right hand side. 9 को हमें right hand side को नहीं जीवा. 9 टा कौन है क्या? Multiply. So when it goes to the right hand side, divides. Okay. So 3 is 9, 3 7 is 21. Hence we get what is the value of y? 7 by 3. This is your solution. Okay. So it is also the similar method as we have done in the question number 1 and question number 2. Okay. So I think you are clear. Then coming to the question number 4. In question number 1 and question number 2 and question number 3 we have two fractions. एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन ने तीन जो क्वेश्चन हमें पढ़ले थे दुईटा लेखा फ्रैक्शन थिले बुझे नहीं ना एठी के क्वेश्चन टिके पढ़ा एठी अछि 3m = 5m minus 8 by 5. ये फ्रैक्शन कितना अछि गोटे ही अछि तो लिखि दे से फ्रैक्शन जाओ की है से फ्रैक्शन 8 by 5. अच्छा यार डिनोमिनेटर केते 5 सेठी हम कोन करथले जेहेतु दुईटा फ्रैक्शन थिला तेनो हम तार एलसीएम बाहर करथले ये तो गोटे ही फ्रैक्शन अछि तार एलसीएम कोन बाहर करिया तो एलसीएम यदि बाहर करिया एक्जेक्टली से 5 ही हो काई ना 5 रो एलसीएम केते 5 पुट कर 1. So LCM is same 5. बुझिएला गोटे फ्रैक्शन था और दुईटा फ्रैक्शन था तुम्हें LCM बाहर करियो. So LCM is 5. That means that 5 must be multiplied with LHS and that 5 must be multiplied with the RHS. Okay. So let us multiply 5 because 5 is the LCM. So write here multiply 5 on LHS and RHS. So 5 को LHS से multiply करिए first केमती का now 5 into LHS how much 3m and 5 into RHS that means 5 into RHS is 5m minus 8 by 5. Okay, now multiply 5 into 3 is 15m is equal to c. This is in the form of a into b minus c. A into b minus c. तारे को रूल अप्लाई होगा distributive rule apply होगा. So use distributive rule. That means 5 is multiplied with this and 5 is multiplied with this. So 5 whole into 5m is bracket minus 5 whole into 8 by 5. So then 15m is equal to 5 into 5 is 25m minus c 5 in the numerator cancelled out 5 1 is 5 5 1 is 5 so it will be 1 into 8 is 8. Okay, so this is the normal equation. वर्तमान कोन करिबो सेही सी टर्म गुडा को हमें गोटे साइड को नै आसीबा जोथरे वेरिएबल अछंती आ जोथरे कांस्टेंट अछन ताको राइट हैंड साइड को नै. So variable की एठी वाला फास्ट सिंगुलरिटी वेरिएबल की m is the variable. Okay, so एपटे जो 15m अछि से फिक्स थाउ. So कहा को लेफ्ट हैंड साइड को आनिबा ए वेरिएबल टर्म ताको एपट को आनिबा बट हमको देखिया को पड़िबो ताको साइन कोन अछि किछ नै माने प्लस से पूरा आसले कोन हिजबो माइनस. So minus 25 is equal to केते रह गेला एपटे फिक्स -8. देखिला आ एठी कांस्टेंट अछि कि -8 को छाडी की नो देयर इज नो अदर कांस्टेंट. Okay, except -8. Now देखो माइनस केमती करबा केते कॉमन नंबर m कॉमन नंबर केते रहि जिवो 15 minus 25 is equal to -8. So 15 minus 25 is -10. m is equal to -8. Okay, so your target is to find out m. ताले -10 टा एक्स्ट्रा अमाउंट अछि एठी. So -10 टा कोन है कि मल्टीप्लाई है कि अछि. So here it has to move to the right hand side. So in the left hand side you have the fixed number m is equal to right hand side रे भी -8 अछि. But minus टा जे तो मल्टीप्लाई है कि हम दोले कोन है जिवो डिवाइड है जिवो. Okay, so minus minus cancel by minus minus plus. Okay, ताले केते बाहरला. So m is equal to 8 by 10. Again reduce it. 2 4 is 8, 2 5 is 8. Hence the final result is m is equal to 4 by 5. Okay, and m is the variable here. We find the value of the variable is
4 by 5 for this type of equation. Okay, whatever the equation you have, but you have to first find the fraction if it is. If there is fraction, then you have to find the LCM and multiply this LCM with LHS and RHS and carry on the procedure. Okay. So coming to the last but not the least question, that is question number 5 of type 3 equation. So in this equation we have a LHS and a RHS and both the sides will contain variable term. Okay, but here we have how many fractions? We have only one fraction, that is 4 by 5. Okay, gote fraction is 4 by 5 और तारा denominator है 5. हम यदि चेष्टा करेंगे 5 पे LCM करें exactly same 5 ही होगा ना नहीं. So LCM is 5. So now we have to follow the previous procedure as we are doing in question 1, 2 and 3, 4. So कौन करेगा वर्तमान 5 को multiply करेगा LHS रे भी RHS रे. So this is the LHS part, okay, and this is the RHS part. So what will write? Multiply 5 on LHS and RHS. So LHS कहते हैं देखो इटा चित्र कहते हैं multiply हो 5. So 5 into x. This is clear? Then is equal to. Then same 5 is multiplied with the RHS. So 5 into RHS. 4 by 5 x plus 10. Okay. Clear? Now 5 into x is 5x is equal to. So 5 is multiplied with 4 by 5. First, 5 is multiplied with 4 by 5. Okay. Then we have x plus 10. Okay. So this can be cancelled. 5 on the 5, 5 on the 5. So we have ultimately 5x is equal to 4 into 1 the 4 whole into x plus 10. So एबे देखि दियो बर्तन जो टाइम ओडे इक्वेशन आसला एटा टाइप 2 इक्वेशन नाही टाइप 2 एटा ब्रैकेट थाए ना नाही सेटा बर्तन टाइप 2 बडे इक्वेशन आसी गला तले कोन करबा सेम जिंसो समथिंग होल इनटू b plus c और a होल इनटू b plus c डिस्ट्रीब्यूटर अप्लाई करेगा. So 4 into x 4 into 10. Okay, so we have 5x is equal to 4 into x plus 4 into 10. So 5x is equal to 4 into x is 4x plus 10 into 4 is 40. बर्तन जनरल इक्वेशन आसी गला. बर्तन जते की भी वेरिएबल टर्म अछि तांको गोटे साइड को ले आसीबा जदी कांस्टेंट अछि तांको आउट साइड को नै जिबा. सो एटी वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड रे ओनली 5x टा फिक्स इज इक्वल तापर देखो राइट हैंड साइड रे अछि ना नै वेरिएबल टर्म अछि के 4x नो प्लस 4x. सो आपको को साइड को नबा राइट लेफ्ट हैंड साइड को नबा देले कोन आइबो माइनस साइन आसीबा ना आसला माइनस 4x इज इक्वल टू के रहगला कांस्टेंट ओनली 40. आ कोठी भी कांस्टेंट नाही केवल गोटे ही रहगला 40 ता जगह फिक्स. ओके तापर देखिया केते कॉमन नबा x केते रहला 5 x चले रहला 5 माइनस x चले रहला 4 इज इक्वल टू 40. So 5 minus 4 means 1. X is equal to 40. 1 into x माने कौन x बराबर. So x is equal to 40. So x ର value हमें पाई गले. So that the equation is satisfied for x is equal to 40. This is the solution of the equation. Okay. So this is the procedure and this is type 3 equation. And using this procedure you can find out the value of x. Okay.